Hello everyone, I'm Soumya Vajpayee and you're watching HT City. ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं. It's been a while since the pandemic ended and we kind of got back to normalcy. While it was inarguably one of the most challenging times that humanity has faced, there was something positive that came out of that time. And especially for music lovers, I think that was the resurgence of independent music in India. The pandemic phase saw a lot of new mainstream musicians, Bollywood musicians per se, venture into independent space and create a niche. While there were also a lot of senior musicians who, got back to making the kind of music that acted like a launchpad for them many, many years ago. So on World Music Day today, it gives me immense pleasure to welcome celebrated singer Padma Shri Sonu Nigam, multi-award-winning composer duo Salim and Sulaiman, and veteran lyricist Anjaan with us today to discuss all things independent music and what has actually led to this revival of non-film music in India in such a big way over the last few years. So firstly, thank you so much for taking time out for us. Pleasure. It's indeed a pleasure to have you. Okay, so speaking of independent music, if we look back at the past decade, until a few years ago, say 3 years ago, when the larger chatter was about independent artists not getting enough room to make a mark, with out and out monopoly of Hindi film music per se, with labels not backing them, and so on and so forth. But the last 3 years have suddenly seen a resurgence, where so many talented artists are getting to make a mark, and they are not dependent on any labels anymore. People are thriving. People like you, I mean, you all are perfect examples of how a balance is struck between film music and non-film music, and things are coexisting. So I would want to understand straight from you on what has led to this revival of, independent music in India. Okay, let me start. Yes. Yeah. Earlier there used to be a huge nexus of CDs, cassettes. So the cassette dealership and the distribution agency, then came the CDs, which were sold in shops. So you had to have a distribution network for CDs and cassettes and all the other stuff. Then came digital and everything went online. So you could release your song digitally. You didn't need a CD player, a CD distribution agency or a cassette distribution agency. But film music still dominated over there because obviously there was a lot of music that was churning out at that point. But independent got its kind of entry from there, where you could release your music. If it stood out, it stood out. If it didn't stand out, theek hai. Then came the lockdown, where suddenly there was no films being produced. There was no film music releasing. And so we were sitting at home, at least the independent artists were sitting at home and making music. And they were releasing it, and there was an appetite for it because you're sitting at home. You want some content to drive you. And so independent music got recognized a lot. And then when the songs started coming out from films and all of that, it kind of coexisted. And it's blended in very well. There is a beautiful ecosystem right now which is in place where independent music gets its own fame. Film music obviously gets its pedestals where you have actors supporting a song. But independent music now has become a genre by itself. The way it's curated, people are listening to more independent music because they're feeling slightly more closer and more personal with those songs. And so suddenly you see a whole burst of people listening to independent music or film music, not knowing whether it's film music or independent music. They just coexist. For me, honestly, I don't think that there is this whole difference between independent and film music. When there was a time when we were making a lot of film music, we were not making it like, of course, wo film ki kahani thi, there were characters and story and stuff like that. But there was a lot of independence there.
we were making a lot of music which had, I mean, songs like Shukrana La and songs like, Heavy Heavy Lud Gaya, for instance. We never, I mean, of course, it was connected very well with the story and the film, but it had a certain independence in terms of the expression and the art form. We never created music for a film thinking कि यार ये, of course उसकी कहानी ध्यान में रखते हुए करना पड़ता था, but at the same time there was a lot of freedom, you know. And I feel like that sometimes now is kind of reducing a little bit because there are too many heads. Yeah. I'm going to be very vocal about it because there's nothing, obviously there is the platform, there is of course director, producer, label, ye wo. So obviously there is less freedom because there are more people talking about what the music should be like. Earlier there was this beautiful relationship between the director and the composer, and then there was this great love and synergy between people who made the music, like the lyricist, the singer. There was a certain kind of love for the art. It's right now turning slightly towards becoming a task. Yeah. कि ये picture है, ये type का music करना है, and that's why you feel that more and more film music. Also, you've seen in the past that independent music is working more than film music. Yeah. It's getting, and so independent music is, and which is not good for independent music, by the way, because independent music has started to sound like film music, and film music has started to sound like independent music. The lines are very blurred now. Yeah. The expression, because independent music, because it's rising, it wants to get more safe, get more commercial, and try to make music which is more massy, because it's getting its love and it's getting its fame. Fortunately, there's also a great thing that has happened is because of the DSPs, like Spotify, Ghana, etc., etc. They are, when you go there, you search for a Sonu Nigam, you search for a singer or a composer. You don't search for an actor. Yeah. That's a You search for a song. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. That's another big reason why independent music has risen. There is a certain, as you see in the last from 2015, 14, 15, 16, there were a lot of remakes that were done. I mean, people danced to it, people enjoyed it, but there was a huge audience that said, ये क्या हो रहा है? What is the reason to make Masakali, remake Masakali? There was no Delhi 7 that was releasing. There was no context for Masakali to be remade, or so many songs as such. Yeah. So there was a lot of pure music lovers who started hating this remake business. And dhire dhire, as you see that every year earlier used to be 10, 15 super hit albums, which came out of films, that started diminishing into just 2, 3, sometimes just one. And independent music, because there were a lot of artists making great music, their music was rising. So yeah, I mean, it started with Alisha Chennai, then it went to Adnan Sami. Films ki ye fitrat hai. They bring in independent music and then they make them into film composers or artists. Yeah. So, and that's a good thing as well. But at the same time, what happens is that independent music that they were making, it starts filtering it down. थोड़ा सेफ हो जाता है, थोड़ा सा वो मतलब और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिल्म की अपनी बेहतरीन दुनिया है. It has a beautiful world. It's just that there are too many heads controlling that. And somewhere I feel that it does. In spite of that, there are still some great soundtracks. There is still some great music being made. But yeah, the essence of independent music is the true freedom. Independent and freedom, they both are brothers. They're both sisters. They're very connected to each other. And that freedom is what you get in independent music. And that's why it's connecting very well with the audiences. ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक अभी है, पहले नहीं था. इट्स अ न्यू जनरेशन, कोई ऐसी न्यू ब्रीड आ गई जिसके बारे में किसी को पता नहीं था. बट डेफिनेटली देयर इज द रीजन बिहाइंड. आई थिंक दिस इज माय थिंकिंग, दिस द डिजिटलाइजेशन की वजह से मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर ओपन नाउ फॉर एनी आर्टिस्ट टू प्रमोट देमसेल्फ. Secondly, I realized that when the film music get deteriorate, day by day the film music is getting, is worse. That's the reason why people are, listeners want music. उनको कहीं से भी मिले, फिल्म से मिले, जहाँ से भी मिले, they will grab that. Secondly, there is no seriousness in film making में जो music department है ना, the producer and director I have seen, the
corporate, even the big corporate, I don't want to name, but there are the people, they don't have even time to call you and narrate the story. They will ask, yaar, if you have any good song, send that. And if you remember when I was doing that Kuch Kuch Hota Hai, 3 hours narration was there. So that seriousness is not there. They doesn't bother. They are taking the film music like a filling the blank. ये गाना डालना है, डाल दो. So what to do? And the music director, like singer, like writer, nobody is getting the opportunity. They don't have believe, उनको लगता है कि ये लोग they are not able to work now. They believes कि younger people will do the better job. The question is not that. You give opportunity to anyone, but give them proper freedom to work, And that is also they are not giving. So they are getting upset, so they have to do something. They want to work, so what to do? And now, because of digital market, that anybody can do their own promotion, anybody can do whatever they want, the freedom is there, the opportunities is there, and now, and ये history रही है कि when film music खराब होता है, always independent music works, वो एक ज़माना हो, तभी मुझे याद है, I did the अदनान एल्बम, तेरा चेहरा, did so well. So ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक अभी बहुत ज़्यादा आ गए, बट चूंकि दैट फ्रीडम वाज नॉट देयर, तब ये था कि नहीं कोई बड़ी कंपनी जब को बड़े लेवल पे जब तक प्रमोट नहीं करेगी, दैट विल नॉट डू वेल. बट ना, इट इफ द सॉन्ग इज गुड, इट विल वर्क. एंड फिल्में बहुत कम बन भी रही हैं, वेरी लेस फिल्म. सो मार्केट को डिमांड बहुत है, मार्केट को म्यूजिक चाहिए. एंड द टुडे जनरेशन, दे आर टोटली ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. They want to hear each and everything on mobile. They want to see each and everything on mobile. So, what to do? So, that market has to be fulfilled. No? So, that's the reason I think independent music is there. अच्छा है मैंने लास्ट में बोला, because everybody has given some such valid points, or maybe इसमें even I've been enriched by this information. I'll streamline from what इससे मैंने क्या gather किया है. पहली बात ये है कि independent music has always been there. अभी से नहीं, 40 से. उसके पहले उसमें बेगम अख्तर जी के भी, और उसके पहले भी जो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे जो फिल्मों में नहीं गाते थे, उनके भी अभी हम सुनते हैं तो उनके एल्बम्स, उनके गाने रिकॉर्ड्स में होते थे. बट उस समय क्या था, फिल्म म्यूज़िक और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में इतना फ़र्क नहीं था. तो थोड़े गाने फिल्मी भी वैसे बनते थे, ये बनते थे, फिर चलता गया. मुझे याद है रफ़ी साहब की गज़लें जो मैंने सीखी हुई कुछ, तो वो फिल्मी गज़लें उनकी वैसी थी जो वैसी गज़लें इंडिपेंडेंट में आई थी उनकी. इतना फ़र्क नहीं था उसमें. कभी कभी एक चढ़ता सूरज धीरे धीरे आएगा तो फिर लोग बोलेंगे अच्छा कव्वाली आ गई अलग से, बट स्टिल इट वाज नॉट रियली अवे फ्रॉम द फिल्म म्यूज़िक. 80s में फिल्म म्यूज़िक का एक अलग साउंड था, डिस्टिंक्ट साउंड था. 90s में उसको बॉलीवुड साउंड बोलना शुरू कर दिया, तब भी एक डिस्टिंक्ट साउंड था. देन पीपल लाइक ए रहमान, सलीम, सुलेमान, संदीप चौटा, प्रीतम, ये लोग सब ने आके ना फिल्म म्यूज़िक में एक प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाई. ये पायनियर्स हैं फिल्म म्यूज़िक में प्रोडक्शन, क्योंकि इफ़ यू सी तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये एक बॉलीवुड का सिग्नेचर गाना है. ऐसा गाने इंडिपेंडेंट में नहीं बनते थे. फिर और पॉप म्यूज़िक अलग था और बॉलीवुड म्यूज़िक अलग था, जो समीर जी ने इतना काम कर रखा है, नदीम श्रवण जी के साथ में, अनु मलिक जी के साथ में, आना मिलन जी के साथ में, जादू के साथ में, वो एक अलग साउंड था. उसके बाद में क्या हुआ, द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग गॉट अ लिटिल इनहैंस्ड, और ज़्यादा वर्ल्ड म्यूज़िक इन्फ्लुएंसेस आना शुरू हुए. एंड देन फिल्म म्यूज़िक एंड द इंडिपेंडेंट म्यूज़िक स्टार्टेड साउंडिंग, जैसे इन्होंने कहा कि सलीम ने कहा कि उसकी लाइन जो है वो थोड़ी सी ब्लर हो गए हैं. वो होते होते अब ये समय आ गया है कि पीपल आर सो लाइक encouraged to come out with their own music. जैसे सुलेमान ने कहा कि अब डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने कुछ अच्छा बना लिया, आपने डाल दिया और आपकी किस्मत चमक गई और गाना हिट कर गया तो आपका हिट कर जाएगा. तो पीपल आर कमिंग आउट विद भूमि, इनका जो भूमि प्रोजेक्ट है, अब आप क्या बोलेंगे, वो किस कैटेगरी में बोलेंगे आप उससे? सब कुछ तो है उसमें, फोक भी है, वेस्टर्नाइज भी है पूरा, कहीं डिस्को भी हो जाता है, कहीं रॉक भी हो जाता है, कव्वाली हो जाती है, सूफी, ये वो, मतलब इंडिपेंडेंट म्यूजिक अब वो नहीं रहा जो पहले था कि पॉप म्यूजिक है तो कब जाने की, वो नहीं रहा अभी. इंडिपेंडेंट म्यूजिक हैज़ नाउ बहुत बड़ा हो गया. वो कुछ भी आप सोच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं.
You can take inspiration from anything. तो these are very good times. और I think इस समय अगर कोई काम नहीं कर रहा तो या तो वो बहुत लेजी है या वो इस लायक ही नहीं है. या वो talented. Right. बात सही है. No, absolutely valid points. And with all of that, I could just gather that we were talking about films and we are talking about independent music. अगर हम म्यूजिक चार्ट्स की बात करें, आपने DSPs का जिक्र किया. So, you know, DSP क्या होता है? Digital Streaming platform. streaming Oh, platform. yeah. So, most of these streaming platforms, they have their own music charts. So, until a few years ago, 5 साल पहले की अगर हम बात करें, तो if we have to look at the top 10 songs in those charts, कम से कम 8 गाने बॉलीवुड के होते थे. ऐसा अभी नहीं है. अब नहीं है. अब इनफैक्ट if you look at an Apple Music or any other chart for that matter, It's pretty equal. not even equal. I think 7 to 8 songs singles होंगे और 3 बॉलीवुड के गाने. अच्छा. So, Soumya, the reason is also because film के इतने गाने आ ही नहीं रहे. There's not so many releases, and at the end of the day, the chart still has to be formed. Yeah. So it could be with high numbers or low numbers. The numbers are still showing that the independent music is being heard more. Yeah. Yeah. Or there are certain lots of reasons because of which that is happening. बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं उन्होंने खुद ने अपने दे स्टार्टेड डूइंग नॉन फिल्म म्यूजिक. Exactly. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द बिग रीजंस. मैं आर्टिस्ट की क्या बात करूं, मैं लेबल्स की बात करता हूं. बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लेबल्स जी. हैं वो खुद इंडिपेंडेंट म्यूजिक तरफ रिलीज आ कर गए रहे हैं. हैं. हाँ, So, तो my ये question ठीक है, was actually that. क्यों हम एक फिल्म प्रोड्यूस करें जी. जो 100 करोड़ की फिल्म हो, क्यों ना हम एक सिंगल करें जो विच इज मच लेसर इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग एंड गेट अ बिग एक्टर एज अ मेन लीड. Yeah. पर वो है एक्चुअली विद एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग. सो बहुत सारे सबका सोचने का नजरिया बदल गया है. दे डोंट थिंक लाइक एक फिल्म एक हिट एल्बम होना बहुत जरूरी है. एवरीवन रन्स टुवर्ड्स सिंगल्स. वो जो एक एल्बम का जमाना था वो कहीं ना कहीं वो खत्म. और कमाल की बात है, समीर जी ने इतना पहले भी काम कर रखा है. हाँ. आई सी हिम डूइंग सो मच ऑफ इंडिपेंडेंट स्टफ आल्सो. Absolutely. समीर जी भी खूब काम करते हैं. Yeah. इंडिपेंडेंट म्यूजिक and कितना that's- करते हैं आप? नहीं सौम्या, वो बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन ये भी है कि पहले फिल्मों के गाने आप देखो तो एक फिल्म में 6-7 गाने होते थे. आजकल मुश्किल से कोई एक गाना कभी किसी फिल्म का निकल जाए तो ऐसा लगता है अच्छा प्रोड्यूसर म्यूजिक कंपनी के दिमाग में क्या आ गया कि दे आर नाउ मोर इन द फिल्म मेकिंग. दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कि भैया हम एक फिल्म बना रहे हैं तो उसकी फिल्म का एल्बम भी उतना ही पावरफुल हो ताकि हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए कि हम कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा म्यूजिक भी चले और हमारी फिल्म भी चले. अब उनके पास 2 प्लेटफॉर्म आ गया. एक तो फिल्म, अच्छा उनको लगता है फिल्म में अगर 1-2 गाना भी हिट हो गया तो मेरा काम तो हो जाएगा, और बाकी साइड बाय साइड वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक करवा रहे हैं आर्टिस्ट से. और मुझे ऐसा लगता नहीं, देखो हमेशा फैशन की डेफिनेशन यही पैंट से बेल बॉटम से पैंट, वो होना वही है कि एक राइट फिल्म, जैसे 80s की मैं बात करूं, कयामत से कयामत आने के बाद पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया. तो सो वी नीड वन फिल्म. कोई बड़ा मेकर एक फिल्म उस कॉन्फिडेंस के साथ बनाए, इट विल 100% वर्क और सब चेंज हो जाए. हैविंग सेड दैट, आज के दौर में भी फिल्म म्यूजिक को पॉपुलैरिटी और वो प्यार मिल जाता है. अभी आज के दौर में अभी हाल ही में ये इसी हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई है. आई हैव नॉट हर्ड सच ग्रेट थिंग्स अबाउट द फिल्म. मैंने खुद देखी नहीं है, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू से. बट उसके 2 गाने ऐसे चल गए कि लोग मतलब जा रहे हैं. सो फिल्म म्यूजिक का एक सर्टेन पावर है. तो बस समीर जी से सहमत हूँ कि येस देयर आर सम इश्यूज हियर एंड देयर व्हाटएवर, बट स्टिल गुड फिल्म म्यूजिक, there is nothing to beat that. I mean, that attracts the audience and takes them there. But that is also, I feel, is slowly dwindling. क्योंकि क्या होता है, when you are, you want to hear music, you have maybe half an hour. You're sitting in the train or you're sitting in the bus, or you switch on whichever is your favorite app, and you'll switch on, go into your favorite playlist. कि ये आज का current playlist ये है या current hits का playlist ये है. You switch it on. If you like the song, you will listen to it. If you don't like it, you will skip it. But at that point, you're not listening to a film song or an independent song. You're listening to a song for what it is, a song. अगर आपको वो गाना पसंद आया, you will look at it and say कि अच्छा ये गाना तो अच्छा लगा. This should go into my playlist, my personal playlist. And that's how
your song is getting recognition on the basis of the song, not on the basis of कि भाई ये फिल्म का The है. medium ये it film comes का from. है. हाँ. So that is, there is a cultural shift that has happened. A lot to do with COVID, a lot to do with the speeds of internet, if you want to call it. कुछ भी हो सकता है. Yeah, yeah, absolutely. I agree with that. And there was this. So initially, there used to be this perception that एक आर्टिस्ट को बॉलीवुड म्यूजिक से, जैसा हमने बात की कि बॉलीवुड म्यूजिक इज ह्यूज इन इंडिया, स्टिल इज, आई मीन परसेप्शन वही है. तो एक आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी को एक बॉलीवुड सक्सेस से इक्वेट किया जाता था, अनफॉर्चुनेटली, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. And irrespective of how good that artist was or still is in the independent space, उनको तवज्जो उसी के लिए ज़्यादा दी जाती थी कि उनके बॉलीवुड कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आए हैं. Cut to today, you all have decades of experience, so to speak, and you all are like thriving in independent music and film music even now. As we said, you're striking a balance. But do you think musicians out there, are they, is there an inclination towards independent music in order to stay relevant with the changing times, given the kind of audience that has evolved? And इसमें digital का बहुत बड़ा role है, because as you said, you know, people don't wait, they just switch. It's like content is just a button away. Yeah. So is it that also, like, is delving into multiple mediums a way of staying relevant today? I don't know. I'm too old for to even go into this space where I need to think about how to stay relevant, because my idea of being relevant is to keep honing my skills, treat the people around me right. Because how much ever smart, I truly believe in luck, and I believe in when the time is right, things happen. I've seen a lot of people putting a lot of attention and detailing into their work, and if the work was not meant to succeed, it didn't succeed. And I've seen some really random work succeeding, random movies working, random songs working. So over the years, I've understood that, keep honing your skills, keep doing a good job, and things will happen to you. So for me, I myself called up Salim and Sulaiman because besides the fact that we know each other for a very long time, I have a very special regard for them. So when I did their song for Bhumi 3, I called him and I said, Bhumi 4 mein mujhe bhulna mat. Yes. So that is not to stay relevant. That's because that's the kind of Work you want to people I want to work with. That's the kind of zone I want to be. That's very want kind to of it. be environment I respect, and I see myself happy. जैसे किसी को अच्छे, जैसे आपने कैक्टस को आपने रेगिस्तान में डाला तो उसके लिए वो करेक्ट जोन है कैक्टस को, ना उसको कहीं और डालेंगे आप माउंटेन में तो वो नहीं जमेगा. क्या बात है. तो मेरे को ये जोन पसंद है. So for me, the idea of staying relevant is to be with the right people, do the work that you feel like doing, and whether it's film or whether it's independent, it's the journey now. For me, it counts. But yes, I'm sure somebody who's 5 years old or 10 years old in the business will definitely want to be seen both in films and independent music. And secondly, Soumya, मुझे ऐसा लगता है because there are the now branches in everywhere. Like in education, आप मेडिकल देख लो, एजुकेशन देख लो, एवरीवेयर. पहले आप केवल MBA डॉक्टर MBBS हो गया, वो खत्म हो गई बात. अभी मेडिकल में भी देखो इतने सारे ब्रांचेज हो गए. सो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बहुत अच्छा है, सही बात. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पे आर्टिस्टों को अब हमेशा वो नहीं होगा कि अगर फिल्म म्यूजिक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक जाएगा नहीं. इट विल बी ऑलवेज देयर. लाइक OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म थिएटर में तो लोग जाते हैं, मगर OTT प्लेटफॉर्म अब पैदा हो गया और वो रहेगा, वो जाएगा नहीं. सो ये जो ब्रांचेज हुए हैं इसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इंडिपेंडेंट म्यूजिक को. एंड इट्स मैं बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, देखो ऐसा नहीं जो तुमने कहा कि फिल्मों से ही आर्टिस्ट बड़ा होता है. आप दलेर मेहंदी को ले लो, वो फिल्म से नहीं आया. आप हनी सिंह को ले लो, वो फिल्म से नहीं आया. बात सही है. इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपनी ताकत से, अदनान भी तो अदनान सामी भी हाँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक से आया है. तो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक में जिन लोगों ने अच्छा काम किया उन्होंने अपनी जगह बनाई. मगर उस ज़माने में चूंकि डिजिटल मार्केट नहीं था, उतनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इसलिए उनको समीर जी उस वजह से नहीं,
फिल्म ने उनको किडनैप कर लिया। और उसका उसी पॉइंट फिल्म पर नहीं ने नहीं उनको सलीम kidnap- सलीम इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में फिल्म म्यूजिक वाज डूइंग वेरी वेल, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अट्रैक्शन था उनको कि यार हम फिल्म में भी गाएं तो बात बनेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई दे गेट इन। और वो आज भी है, और वो आज honestly, आज भी है। हम कितना भी कह देना, मुझे पता है कि आज कोई फिल्म का कॉल मुझे आए तो मैं ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन भूमि 23 नाउ एंड बहुत सारे अदर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन मैं जरूर मेरा बिकॉज Of course, film making. born and raised यार। Yeah. आई डोंट वांट टू लाई टू यू, कितना भी आदमी इंडिपेंडेंट हो जाए ना, फिल्म्स अपने खून में है, अपने उसमें है, अपने अपने रग रग में है। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। हम बचपन से इसी सिनेमा को देखते हुए हम बड़े हुए हैं, कितना कुछ सीखा है। और लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट इट। आज मैं तो बिल्कुल आई एम ओपन अबाउट इट। आज हम इतने कॉन्सर्ट्स करते, इतने शोज करते, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 10% ऑफ आवर शोज कॉन्सर्ट्स में हम 10% सिर्फ हमारे इंडिपेंडेंट गाने गाते हैं। 90% हमारे, ये एक बात फिल्म की खुश नसीब है दैट इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की हम और इतना अच्छा म्यूजिक कर पाए। वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स, द फिल्म कंपनीज एंड द पीपल एंड द क्राउड दैट हैज गिवन अस सो मच लव। बट इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है कि 90% ऑफ आवर परफॉर्मेंस मटेरियल इज फिल्म। यू नो, कुछ हमारे गाने ऐसे हैं जिसको हम नहीं परफॉर्म करें तो मतलब अधूरा सा लगता है, एंड वो सब फिल्म के गाने हैं। सो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स दैट यस, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की अहमियत जरूर है, लेकिन फिल्म म्यूजिक की जो रौनक है ना, वो है और चलती रहेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसके अंदर ऐसे होता है ना कि some music you do for bread and butter and some you do for your soul. For jam. I mean, no pun intended. actually, अच्छा है, जहाँ भी है। That's a good one. That's a really good one. So इसमें क्या होता है कि film is a bigger canvas. It's a bigger canvas to paint on. Independent music will always stay and always give you your creative output. But I guess the pinnacle for a lot of aspiring people is कि यार एक फिल्म के अंदर गाना गा लूं या एक कुछ, उसकी है अपनी बात है। it's there. Yeah. You charm cannot is stop. There is no independent versus film ever. They both coexist. They There is- both. No, never. Let's not face that at all. और एक There is बहुत never a अच्छी versus. बात है सौम्या, बहुत अच्छी, वो ये जो फिल्म के लिए जो इंटरेस्ट है ना, दैट विल ऑलवेज देयर, नो डाउट अबाउट इट। बट ऑलवेज होता था जब मैं बहुत सारी फिल्में भी कर रहा था ना, तो कभी जब मुझे कोई प्राइवेट एल्बम मिले लिखने के लिए, तो आई फील सो गुड, यू नो, ये बात भी यार ये कुछ अभी फिल्म से हट और वो क्या है, जो नहीं कर रहा होता उसको उसको ज्यादा अच्छा लगता है। आप इतने फिल्मी गाने कर रहे थे कि क्या? आपको जब प्राइवेट मिलता था तो आपको लगता कि अरे कुछ मुझे आजादी मिली, और आजादी। और जिसको सिर्फ इंडिपेंडेंट गाने मिलते हैं उसको लगता है अरे फिल्म में मुझे हाँ मौका मिल मिल गया। गया, वो सेम होता है। Grass is always greener on the Absolutely, other side. अदर साइड And या taking forward from there, when we talk of creative liberties, like हमने शुरू में भी बोला कि बॉलीवुड सॉन्ग जब आप करते हैं, there is a set idea, there's a set storyline, एक limitations होते हैं, and maybe the nature and the way you treat it could be different, but ultimately you have to stick to a certain brief. As far as independent is concerned, वहाँ पे आप creatively you can be as independent as you want to. So when you now, considering you all are doing it parallelly, there's a paradigm shift and things are happening together. So is there a shift of gears that one has to do? Actually, now I'll tell you what has happened. A lot of people will come and say कि यार, you know, you did this in Bhumi. Yeah. Can you do something like this for us Oh wow. as a film? ऐसा भी हो रहा है। पहले ऐसे होता था कि यार ये आपका हैवी आपने बनाया, वैसा एक गाना मुझे चाहिए. Now because ultimately the listening audience is the same, right? The audience that is going on to let's say a Spotify or a Gaana or whatever is still the same. Some might prefer slightly more easier songs which are more palatable, and that sometimes is part of the film industry because you try and make commercial songs. But there's an equally curious and creative audience that loves listening to all the creative stuff that we do. So Having said that, there's a song that we worked on last year with Sonu. It's called Ruk Ja. Yeah. For that song, मैंने अपने आप में एक सिनेमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर ली थी. We were making an independent song, but एक सिचुएशन मैंने क्रिएट कर ली थी कि एक लड़का और एक लड़की सेपरेट हो रहे हैं और एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं. ये लड़का कहता है रुक जा यार,
रुक जा, ना जा रे दिल तोड़ के, एक so I created a cinematic situation for an independent song. Like I said, ये हमारे खून में हो, ये सिनेमा की जो ये सीन है ना, तो मैंने अपने आप में एक स्टोरी क्रिएट कर ली that helps the writer, that helps the singer, you know, just to create a mood. तो ये of course independent music में वो एक there's no character, there's no situation, there's no story, anything like that. There's a lot of freedom. But independent music करते वक्त भी अगर आपको if you create एक cinematic एक story आप कर लेते हो तो आपको help करता है. So ऐसा कुछ there is no rule as such कि you know where you start from and where you end. It doesn't matter. कुछ चेंज करना पड़ता है. Some music. पता नहीं, but I can talk about my days in the 90s when I was doing सारेगामा and उस समय जब मैं मर रहा था यार कि प्राइवेट एल्बम करना चाहिए कोई. सब कर रहे हैं, बाबा सैनिल कर रहा है, ये कर रहा है, मुझे नहीं मौका मिल रहा. मैं जवान हूँ, कमसिन हूँ, हसीन हूँ, मुझे तो कोई मौका मिल नहीं रहा. तो मुझे कोई मिला ही नहीं ऐसा मौका. Then suddenly, you know, I got a call. I did one thing with Raju Singh. एक एल्बम की थी आत्मा सपने की बात. Then I did one song for Salim Sulaiman. ये मेरा इंडिया. वहाँ शशि गोपाल जी से मुलाकात हुई मैग्ना साउंड के. तो what happened was then we started working on my album called किस्मत, जिसमें तो गाना था. तो चेंज तो अब गेयर तो यही हुआ कि फ्रॉम नमस्ते इन पैर छूना पजामा कुर्ते से लेकर सिगरेट हाथ में. पहली बार सिगरेट तेरे और मैं कर रहा तो अनुभव सिन्हा ने मुझे सिगरेट दे दी हाथ में. मैंने बोला स्टेज पे सिंगर जाते हुए सिगरेट कैसे पिएगा. नहीं ऐसे करेंगे. तो ये दिस वाज द फर्स्ट चेंज ऑफ गियर. चश्मा पहन के जो मैं कभी पहनता ही नहीं था जी, अंधेरे में पहनना. स्टेज पे भेजा मुझे, तो वो शूट हम करे थे तो डांस वांस किया. तो आई रिमेंबर दैट शिफ्ट ऑफ गियर फॉर मी बिकॉज आई हैड नेवर डन दैट. उसके बाद तो फिर मजे आ गए. फिर पाशा बसु आ गई, दिया आ गई, ये आ गया. इसमें तो बहुत ही सब कुछ हो गया. But see, this is the difference between independent music and film music. In the film genre, you're giving away a song, right? In this one, the song is yours. In independent You are the music, face of it also. you are the face of it. You are the character. You could be a different character, but it is your creative liberty to have it picturized on you or to have it picturized on somebody else. So you But वो एक liberty होती है, which is part of, you know, a very big part of the independent. So you song. recently saw a show of mine. So you saw the बिजोरिया का पागलपन तो देखा था. yeah. So I had told सरोज जी कि मेरे को ना सिर्फ सिंगर मत समझना. डांस भी मैं कराओ. बोला जैसे सोचना कि ये गाना गोविंदा पे पिच रहा है इसने तो मुझे वैसा डांस कराना. So what he's saying is now that song, that step has become mine. It is not, I'm not doing an actor's step. When I'm performing on stage, people are looking forward to my step. Yeah. They're not looking forward to me doing somebody else's stuff. True, absolutely. तो ऐसा जो काम सही वक्त पे कर लिया, today we are still reveling on that glory. Nice. So आप बताइए, when you write for films now and when you write an independent song, क्या फर्क रहता है? डेफिनेटली समझा. पहली बात ये कि जो इंडिपेंडेंट में हमको जो फ्रीडम होता है, देयर इज नो बाउंड्री. भाई आप ऐसा गाना लिखो वैसा, तो हम कुछ भी व्हाट एवर आई वांट आई कैन राइट. बट फिल्म में डेफिनेटली वो बाउंड्री तो है, वो सिचुएशन है, एंड वहाँ पे चॉइसेस भी हैं, वहाँ पे कंपोजिशन भी है, सब कुछ है. इंडिपेंडेंट म्यूजिक में वही. मगर एक अच्छा मुझे अभी लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के आर्टिस्टों के लिए दिस इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि पहले भी लोग ढूंढते थे कि यार वो दलेर का गाना बहुत चल गया है, वैसा एक गाना फिल्म में डालना चाहिए. बहुत से गाने उन्होंने डाले भी. और अभी मुझे लगता है जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि जैसे इनका कोई एल्बम चलाओ, हमारा सोनू का किसी का भी चलाओ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैन गेट दैट सॉन्ग फ्रॉम देयर कि यार वो गाना हम Already होता ही है. बहुत हो रहा है. Already हो रहा है, Already होता है. बहुत हुआ है. So many Punjabi songs are. Exactly. comedy पंजाबी like इवन वो गाना किसी लड़के का, आई डोंट नो हु हैज रिटन दैट. वो सुखबीर का गाना भी वापस आया फिल्म में. इसमें तेरा घाटा दिल लेना, वो मेरा कुछ नहीं जाता. दैट सॉन्ग वाज क्रेज, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं हाँ, जाता. एंड दैट सॉन्ग सम प्रोड्यूसर्स buy from him and now he is picturizing in the film. So वो क्या है, इन प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो कहीं से भी अच्छा काम मिलना चाहिए. अगर उनको वहां से नहीं मिलता, इधर से ले लो, इधर से नहीं मिलता, उधर से भी. समीर जी, ये तो पहले से ही हो रहा है. मतलब हम जो बात कर रहे थे, पहले से हो रहा है. ये सारे लोगों को लाया फिल्म में इसीलिए क्योंकि उनका म्यूजिक वहाँ पॉपुलर हो गया. तो अब अच्छा I'll tell you जो डिफरेंस है एक और, क्योंकि I can only talk about my myself. So हमने किस्मत की बात एल्बम बनाई थी मौसम, जिसमें बिजुरिया गाना था.
So instead of, because उस समय I was doing संदेश से आते हैं, ये तो दीवाना, इस तरह गाने कर रहा था मैं, and this is 1999, just अभी भी मतलब गाया हुआ है, अखियों से गोली मारे, सब गाए हुए जो हमने गाया. I thought I'm gonna make an album और उसमें अपनी मर्जी से गाने करूँगा, तो एक बिजुरी डाला, and there was one song called Yesterday Was Tomorrow. उसमें लिरिक्स थे ही नहीं. उसमें था सा नी ध नि सा रे सा ग म प प ध म म ग ग प सा नी ध प म म ध सा नी ध प म रे ग रि नि प म ध प म ग रे जो सा नी ध नि सा रे सा ग म प ग ध म म ग नि सा ग म ध नि सा. ऐसे था पूरा गाना सरगम में किया था हमने. ये हम कर सकते हैं अपने प्राइवेट एल्बम में, अपने इंडिपेंडेंट गाने में हम ये कर सकते हैं जो फिल्मों में कोई लेगा नहीं. क्या करें, लिरिक्स सही नहीं इसमें. सही बात है. Sorry, Correct. Salim. वो एक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि गाओ कैसे. कैसे करेंगे? सरगम याद कैसे वो मुझे याद है, बहुत टाइम बाद मुझे खुद भी याद है. I recently asked him, guess, so let's do something classical for movie. हाँ, मेरा काम पकड़ लो. मुझे नहीं करना. Classical नहीं करना. अभी I want to, like, in the while cameras are rolling, I want to just say that he is an artist, can do anything. Yeah, absolutely. Anything. इसमें तो कुछ I asked him कि नहीं है. क्लासिकल करते. He said मुझे तो आता ही नहीं क्लासिकल. Oh my God. ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा- इसको सीखा तो नहीं है. सुनने से सिर्फ आना इसको नहीं कह सकते, मतलब सुना बहुत है, सीखा तो नहीं है, ये तो सब जानते हैं. कोई ऐसे कह नहीं सकता कि अभी मुझे जो हमने गाना बनाया है इनके लिए, मूवी के लिए, वो मुझे थोड़ा जाके रिविजिट करना पड़ेगा, उसमें सरगम वरगम डालनी पड़ेगी थोड़ा सा. I'm so sorry. Cutting. No, not at all. So I would also want to understand, हम लोगों ने इतनी बात करी, the role of social media in this. It definitely has played a role. कितने levels, कितने extras को सुपरसीड कर दिया इस मीडियम ने. इसमें एक बुरी चीज भी है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग सक्सेसफुल हो गए और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग टैलेंटेड जो मतलब कहलाए गए. नहीं, बहुत सारे कहलाए- टैलेंटेड लोग भी सक्सेसफुल हो गए. करेक्ट. आई मीन लाइक अ लॉट ऑफ, हाँ मतलब टैलेंटेड जो चल गया, वो चल पीपल, गया. टैलेंटेड पीपल, सक्सेस और टैलेंट का जो वो कॉम्बिनेशन है ना, वो निकल गया है. But इसमें किस्मत का भी बड़ा खेल है. किस्मत का ही खेल है. Soumya, I also believe that social media is just like your news, right? It's like your own personal news that you are being able to spread to the world. And वो जो freedom पहले नहीं थी, if you had to talk to somebody, I would have to call you, Soumya, कि यार, I have some news, can I share it with the world through you? But before that, now we are sharing it. Now we're sharing it with the world. Good things. मैं कहने ये जा रहा था कि lot of successful people sometimes, a lot of talented people don't get the success, and lot of successful people I'm not talented. are not talented. मुझे बोलने बुरा लग रहा था नहीं, ये, बिल्कुल, but जो it's a है, सो fact. है. So social media has done that also. Yeah. Has created that perception. तो है. कि यार millions of followers for some person. I mean, where's the talent? The number of followers has become a has like become a benchmark. Yeah. कि यार मुझे इस सिंगर के साथ काम करना है, मैं पहले जाके देखूं तो सही, आवाज सुनने के पहले मैं इसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग देख रहा हूँ. ये क्या बात है? फॉलोइंग है तो बड़ा है, नहीं है. Yeah, What is this? that is the उन्होंने उसका पैरामीटर बना लिया कि अगर सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल है अरे पर मैं उसकी आवाज सुनूं कि मैं उसका इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखूं? This is not nice. I mean, a lot of labels do that. I'm going to be very straight up and honest, but कर रहे हैं लोग ये. जी. And it's not only just the music industry. I mean, the casting industry, जो लोग फिल्मों में उनका रील नहीं देख रहे, जो क्या वो आर्टिस्ट क्या एक्ट कर सकता है, क्या उसके एक्सप्रेशंस क्या है, उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग पे आप उसको काम दे रहे हो. That's something कहीं which is not. कहीं एक सेटबैक भी है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो इस प्रेजेंट टेक्निकलिटी से वाकिफ नहीं है, अब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं बट वो दे डोंट नो द टेक्निक. They're not tech savvy. सो फॉर देम इट इज वेरी बैड हिसाब से हाउ रणबीर कपूर को तो कोई फिल्म टू नहीं बी मिली. पॉपुलर ऑन It's not on social media. True, true. या कि इंस्टाग्राम पे कैसे जाए, फेसबुक पे कैसे जाए, कैसे, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज जो आती है ना उसका प्लस और माइनस दोनों होता है और वो वही हो रहा है. बिल्कुल. It's a great thing if you can use it properly to interact with your fans. आपके fans आपको हमेशा बहुत प्यार करते हैं. So for that, to connect with them, to show them your new work, to see what you're eating, even forget about the music part of it, to see who your loved ones are, a little bit of your family. A glimpse in your personal life. Yeah. That's a good It should be a medium to connect and not a platform to judge. It's a great thing. It's a great thing. I think it's all social media is fab, but the only downside is this: Yeah. that it creates a perception. And I really pray to people who are watching this that don't create that perception. आप किसी की Instagram following देख के उसकी talent का वो gauge मत अंदाजा नहीं कर सकते. That's not right. I was watching Sonu's every vlog in COVID Yeah, because yeah.
because he's not only just a great artist, he's a very dear friend of mine. I wanted to know what he's doing, you know. So it became like a thing कि मैं हमेशा मैं I could see कि वो where is he? He's in Dubai, he's here, कभी ऋषिकेश में है, तो I could follow him. तो वो एक रिश्ता बन जाता है. So it's a good thing if you use it properly also. True. You know, like, I mean, he was connecting not only his fans through his vlogs, but he was connecting his friends as well. So that's एक जरिया बन जाता है. It depends on how you use it really. कभी कभार he is doing riyaz, you know, Tanpura Lal he's doing riyaz, and he's live, and And it could be so empowering for people who are watching. very good. It's very Like inspiring. आपने बोला आप सीखे नहीं हुए हैं, but you invariably become a teacher for so many. Very inspiring. Very inspiring. He's talking while the Tanpura is on. Of all the songs that you all have done, independent songs, कुछ दो line of your something that is really close to you, something that you just feel like humming to celebrate independent music. तो फिर रुक जाएगा रहता है ना, हाँ. जो हमारा लेटेस्ट है वही गाते हैं ना. फिर एक इस बेटर एक ही बंदा गाए क्योंकि फिर नहीं दो सब गाते हैं. लिरिक्स में नहीं, हटका जैसे हटका तो साथ में सर गाते एक दो लाइन्स Yeah. नरेट करेंगे. हाँ. हाँ. ये भी अच्छा गाते हैं. गाना भी देना है. That will be a pleasure. He's just joking. तो क्यों ना हम पहले रेसिडेंशन I से cannot Bill, dare. let's start with the rest. रेस्ट्रिक्शन No. हाँ पहले कुछ एक Irshad. First we have to start with Sonu. क्योंकि पहले आप, पहले आप. तुमने गाने की बात कही तो he has to start first. पर अरे आप ही तो बोल रहे हो लफ्जों के बिना गाना होता ही नहीं है. लिबर्टी तो जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में जो होती है तो हमारी उसमें liberty तो जब- लिरिक्स और वोकल्स और सिंगिंग और सब एक ही है. हाँ तो इसीलिए जब मेरा नंबर आएगा तो मैं तो आपका नंबर सबसे नहीं, पहले पहले आप आएगा ना. लिखेंगे तब गाया we जाएगा. start from Sonu. So I think we should just चलो have हम लोग Sonu साथ में गाते sing. हैं. It would be best so that we don't look bad. रुक जा ना जा रे दिल तोड़ के, रुक जा ना जा रे मुंह मोड़ के, हमसे पूछे बिना चल दिए, खुद ही तय कर लिए फासले, रुक जा ना जा रे दिल तोड़ के, रुक जा ना जा रे मुंह मोड़ के. My God. I think we should end it here and go to Samir ji because it's सुर के मामले में अगर बात हो तो अभी तू नजर मिला. आपके लिए हम ही गए थे. आप समझी अदरानिया बैठे. अभी तू आप ही कहना है. of course कौन सा आप ये है ना. नहीं मेरा नहीं. आप कौन सा है? तेरा चैनल तेरा चेहरा. ज़मीन झुक जाए, आसमान रुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, It's too good. तेरा चेहरा जब नजर आए हो. पर मुझे कहना है क्या बात है यार. ये गाना मैं सबसे कह दूं कि वी हैड प्रोग्राम दिस सॉन्ग. यार गाना जब तो अच्छा चारों के लिए गा दी मैंने. चारों अदनान का क्या होता है ना, मुझे बहुत 2-3 एल्बम उसके साथ किए हैं मैंने और बहुत आई ऑलवेज एडमायर वो. उसका जब मैंने पहला एल्बम सुना था जो पाकिस्तान में उसने किया था ना, तो आई फेल्ट सो गुड यार, ये कुछ है. वो था कभी तो नजर में. हाँ कभी तो वो लगता है. मुझे लगा कि इस आदमी के साथ कभी, जैसे मैंने पहला एल्बम दूरी किया इसके साथ आतिफ असलम के साथ, सो आई फील कि यार दूरी आपने लिखा. सो मुझे लगा सही जाए ना. बहुत मजा आएगा अगर कभी ऐसा मौका आए. सही जाए ना. सही जाए ना, सही जाए ना. Oh my God. वो गाना जब उसने मुझे कहा कि यार ये जो कंपोजिशन मैंने सुनी ना, तो मुझे लगा कि यार इस पे कुछ बहुत रोमांटिक होना चाहिए. एंड सडनली वो लाइन मुझे याद आई. असल में मुझे दिमाग में पहले वो लाइन आई थी कि ये ज़मी रुक जाए और आसमां झुक जाए. सो मुझे लगा कि मगर ये मैं बोलूँगा किस लिए कि किस लिए ऐसा हो जा सकता है. देन आई रिमेम्बर कि तेरा चेहरा जब नजर आए, बहुत अच्छा लगता है. Beautiful song. तो वहाँ से वो पूरा गाना बना. Most कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है. और मुझे इस बात से कई बार दुख भी होता है, जैसे इन लोग हैं या हम, कि
अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, आप इनको मौका तो दो यार काम करने का। आपने एक माइंड में ब्लॉक कर लिया कि नहीं, इन लोगों के साथ काम करने नहीं, पुराने ये क्या है लोगों ना, के साथ। ये जो सेंटिमेंट है ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी स्टार्टेड आवर ओन record label. कि यार we wanted a creative output for all the music that we thought was very cool, very good, very now, but we were not doing it because there was, there is a bandhan in the film where you feel ki nahi yaar, we can try and take it to a limit. I mean, we've always pushed boundaries. In heavy, if you hear the whole beat and you hear the whole music production, the way it was done, with the words, so creative. That song was a reject, huh? The director had rejected The it. director rejected it and said कि यार ये गाना मेरे को समझ ही नहीं पड़ रहा है. Fortunately, I had to speak to the producer and plead him कौन सा गाना? कि कभी-कभार heavy लुट गया. वो एक्टर की पहली पिक्चर थी, डायरेक्टर की पहली पिक्चर थी. I had to really request the producer कि यार ये गाना ऐसे गाने कभी-कभार बन जाते हैं. मैंने भी उसके एक हफ्ते पहले हम लोग दिल्ली में गए थे, एक शादी में गए थे संगीत में. वो संगीत तो ठीक था, पर उसकी आफ्टर पार्टी में म्यूजिक बहुत कूल था. और मुझे ऐसा लगा कि यार बैंड माशा बारात की जो फिल्म है, इसमें ये म्यूजिक होना चाहिए आफ्टर पार्टी वाला. तो ऐसा मेरा एक थॉट था और सोचा कि यार चलो देखते हैं, और किया और अच्छा भी हो गया. गाना सिंपल था, प्रोडक्शन कूल था, लेकिन डायरेक्टर को नहीं. तो इट वाज अ स्ट्रगल, बट फॉर्चुनेटली द प्रोड्यूसर मेरा बोला कि यार मुझे पता नहीं, उसने डायरेक्टर को बोला कि मुझे पता नहीं तेरी फिल्म का क्या होगा, तेरे एक्टर का क्या होगा, ये गाना हिट है, लेट्स गो विद दिस सॉन्ग. सो देयर वाज स्टिल एक क्या कहते हैं ना, एक वो थी, एक होप थी कि यार एक तो बंदा समझ जाए कि अच्छा है. हाँ. पर अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है. एक हटके कोई गाना, एवरीवन वांट्स टू बी वेरी सेफ. फॉर्मूला. एवरीवन वांट्स टू बी सेफ. कुछ भी कहीं भी रिस्क किसी को नहीं लेना. जी. So that creative outlet which, a composer, a producer, a singer, a writer, he needs that creative outlet. कि यार चल फिल्म के लिए मैंने बना दिया, सबको कन्विंस करना पड़ता है पहले तो कि ये गाना अच्छा है, किसको समझ पड़ती है, किसको नहीं समझ पड़ती है. But at some point, between Salim and we decide on a song that we think is very cool, which might not go in the genre of the film or any genre. You could create a new genre. Another thing which I felt like, which we also, because we started doing a lot of devotional music. Yeah. A lot of people used to call us Sufi merchants and this and that. ये सब नाम इंडस्ट्री वाले. और रब ने बना दी जोड़ी, शुक्राना अल्लाह, बहुत सारे रब रखा, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें रब की बात है, ऊपर वाले की बात है. And those songs actually have become popular. And we believe that devotional music has been going on for centuries and will continue for centuries. So we started doing a lot of devotional music on the side. चाहे वो कवाली हो या भजन हो या शब्द हो या आरती हो. We started doing all that just for the love of it, and we started feeling the power. और वो तो जाहिर है फिल्म में आना बहुत मुश्किल है, बट मुझे पता है उसका पावर क्या है. And I started seeing that a lot of people are making devotional music now, not because of for it that it's commercially this thing great or whatever. It just gives you a lot of happiness. Recently, I know that Sonu did a beautiful Mahamrityunjay mantra, which is so lovely. And this, he constantly does Hanuman Chalisa recently. And there's a lot of love and joy and timeless quality in that. ये चलते आ रहा है और चलता रहेगा. So that all that stuff is actually released as independent music. It is independent. In fact, when we made Ali Maula, it was not supposed to be in a film. वो तो भैया Karan heard it and he said कि यार ये मुझे गाना बहुत पसंद है. I'm going to be doing a film called Qurban, उसमें डाल दो. Something like that. So these things happen, I mean. Sonu, I remember one thing. कि हमारा तुम्हारा अदनान का एक गाना था. अदनान ने जब वो ट्यून दी थी ना, तो मैंने बोला अदनान, मैं बोला सर आप कहीं भी लिख लेते हो, आप प्लीज. मैंने बोला ये इस पे कुछ एक ट्यून है ही नहीं, ये वायलिन का रन लगता है. एंड ही वाज सिंगिंग अरे मैंने बोला ये वर्ड्स क्या है, बड़ा मुश्किल काम लिखना चाहिए. और मुझसे एक अच्छा जब डिसाइड हुआ कि गाएगा कौन, मेरे मुंह से एक ही नाम निकला कि अगर कोई गा सकता वो तो बहुत बेहतरीन लिखा है आपने. बट वो इतना मुश्किल था सलीम. वो गाना भी हम नहीं गया प्रोग्राम से. इतना डिफिकल्ट गाना था, आई कांट टेल यू. Okay, so we close this on the note of World Music Day. It is World Music Day today. So just in a nutshell, I would like to understand from each of you what music means to you. वो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो बेस्ट लाइन है कि मिले सुर तेरा
मेरा तुम्हारा. Mera Tumhara. That is the world music, I think. And now what we were talking about that कि अभी जो जैसे भूमि का गाना है, जो भी गाने आप बोलते हैं, वो कि सारे अब वो चूंकि ग्राउंड इज वेरी मच ओपन कि आपको पूरी दुनिया का म्यूजिक आपके फिंगर टिप पे है. आप कोई भी म्यूजिक कहीं का भी सुन सकते हैं और उससे इंस्पायर होके उससे कहीं ना कहीं कि हमको भी कुछ ऐसा बनाना अगर हो तो हम अपने म्यूजिक को उस म्यूजिक के साथ कैसे कनेक्ट करें. सो ये कनेक्शन जो है ना, दिस इज द वर्ल्ड म्यूजिक आई थिंक. What Music is everything. For us, it's everything. We grew up with music. We'll probably die with music. For me, every day is World Music Day. yaar. It's just like Mother's Day. You know, do you think it's like we need a separate day for it? I mean, 21st June is World Music Day, but for me, every day is world music. My world is only music. Well, So I don't think it's I mean, it's great that the world has given it a day, but for me, every day is that. I think all of us will agree to this one thing that we cannot even imagine as a nightmare to be alive in this world and not understand music and not understand to not be able to do this, to not be able to understand this, to not be able to because जिन लोगों को नहीं गाना आता बेचारे वो गाने को क्या समझ के करते उनके लिए कितने रैंडम चीज होगी. And for us music because like whenever we are chilling we don't listen to music because at Yeah, that true. time we are all because besides that time 23 and a half hours we would have probably Yeah. listened to music, thought of music. So we need the time out of music to chill and people chill and listen to music. Can you imagine how much music we have, how much music are we drowned into. हम बाहर निकलते ही नहीं है. तो म्यूजिक तो मतलब एक ऐसी चीज है कि we can't imagine our existence without music. None of us, no artist who has truly been into music or lyrics or whatever, any art form, I think. beautiful. And I think that kind of summarizes what we are here so- today for. That a beautiful combination and coexistence of independent music and film music is Absolutely. the way forward. Yeah. So thank you so much. I'm Thank really you. grateful that Thank all you of you spared your precious time Thank for you us. so much. Thank you, Thank you. Sonia. Even we love Thank you. to be with you.